Welcome to Sanjeevani Education Group. Sanjeevani Education Group is a IIT NEET coaching hub which is renowned for producing the rankers in different competitive exams from national level 11th and 12th JEE NEET, Standard 10th NTSC MTSC, 6th and 9th Dr. Homi Bhabha Bal Vaidyanik exam, 5th and 8th scholarship exam, 7th Olympiads along with IIT NEET Foundation for all classes. We have experienced faculty who focus on the academic development of students. So dear parents, hurry up. For admission, visit Sanjeevani Education Group, plot number 13, Aditya Nagar, Gadkhera, Aurangabad, or call 95112 70135 or 95112 66680. How are you? Fine now? Okay, very good. So in the previous lecture or last lecture, we have seen the transportation in plants and animals. How does the different type of substances are translocated or transformed in from the one place to the another place in the plants and animals. So we are going to study or discuss about how the blood, that is human male body circulating fluid, that is blood. Okay, a study of blood is called hematology. तो blood की जो study करते हैं, that is called as hematology. Hemat means blood and logos means to study. Study of blood is called as hematology. Okay. Now next, last lecture हमने discuss किया what are the properties of the blood. Such as blood is one of the softest fluid connective tissue of the body. Then pH of blood is 7.4, slightly alkaline. Then color of blood, venous blood means deoxygenated blood has scarlet purple in color, and oxygenated means arterial blood is bright red in color. Then density of blood is slightly heavier than the water, and so on. This year हमने लास्ट लेक्चर में ब्लड की प्रॉपर्टी डिस्कस किए. आज हमें डिस्कस करना है कंपोजिशन ऑफ ब्लड. compositions of blood means content of blood. What ingredients of blood, what are the content, what are the substances present in the blood. ब्लड के अंदर कौन कौन से substances होते हैं, ये आज हमें डिस्कस करना है. ओके, let's see. blood contain a liquid portion. The liquid portion of blood is called as plasma. What is it? It is called as plasma. And the cells which are present or embedded in the plasma called as blood corpuscles. Blood corpuscles or blood cells. So called as blood cells or blood corpuscles. So blood is mainly composed of two parts. One is the liquid portion and the solid portion of the blood. This liquid portion of the blood is called as plasma, while the solid portion of the blood is called as blood corpuscles or blood cells. Now see, plasma forms about 55% portion of the blood, while blood cells forms about 45% portion of the blood. इस blood में 55% portion ही plasma है and 45% ये blood corpuscle means blood cells है. Okay, so see what is a plasma. Plasma कैसे होता है, देखो अभी इसमें plasma जो होता है, what are the content of plasma. Plasma means क्या होता है, plasma is a strong colored and alkaline fluid. कैसा fluid है, alkaline fluid which contain approximately 98% of water or 97% of water and 98 to
water. Then it also includes the proteins called plasma proteins. What is it? Plasma proteins. So these plasma proteins contains most important proteins. These proteins are, first of all, that is fibrinogen, means fibrinogen. Then prothrombin, fibrinogen, then prothrombin, then heparin, then serum albumin, and serum globulin. So these are the most important plasma proteins, is the proteins present in the blood. So plasma protein कौन से important है? Fibrinogen, then prothrombin, then heparin, then albumin and globulin. Okay. So what is the function of these plasma proteins? क्या function था plasma protein का? See, if fibrinogen and prothrombin, these proteins are concerned with blood clotting or coagulation of blood. Coagulation of blood. Blood coagulation means blood clotting. What is a blood clotting? See, whenever any injury occurs on your body, there are some small blood vessels are ruptured, and the blood from these vessels are oozing out. This comes out from the body. So this process is called as bleeding, means loss of blood. So this bleeding is not occurs continuously. After near about 3 to 8 minutes, this bleeding gets stopped. Why? Because of the liquid blood get converted into the semi-solid jelly. This process is called as clotting of blood, or also called as coagulation of blood. So why this clotting or coagulation of blood occurs? This clotting or coagulation of blood is one of the defense mechanism of the body to prevent excess loss of the blood, okay, at the time of injury. So why this clotting occurs? It is because of presence of fibrinogen and prothrombin, along with the platelets also, and along with there are 12 factors which are involved in the blood clotting, which includes fibrinogen, prothrombin, then vitamin K, then calcium, Stewart factor, then anti-hemophilic factor, Hegman's factor, Christmas factor, tissue plasminogen activators, and thrombokinase. ऐसे 12 फैक्टर मिलाकर ब्लड को क्लॉट करते हैं. वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ओके ना, बट ड्यूरिंग इंटैक्ट ब्लड वेसल ब्लड डज नॉट क्लॉट ना. अभी आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, अभी वो अंदर क्लॉट हो रहा है क्या? नहीं. लेकिन अंदर फाइब्रोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, वो ब्लड क्लॉट होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है. इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोजन, that is anticoagulant. Anticoagulant means this protein prevent the coagulation of blood. During intact blood vessel, blood does not clot. This because of presence of naturally synthesized anticoagulant, that is heparin. It is naturally synthesized in the liver. Where? Liver. ऐसे artificial में synthetic anticoagulants भी है, इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, जिसका मोस्ट कॉमनली यूज होता है EDTA, इथिल डायमाइड टेट्राएसिटिक एसिड, और ऐसे कई सारे एंटीकोएगुलेंट हैं. आपने कई बार देखा होगा कि आप जब ब्लड सैंपल देते हो ब्लड टेस्ट के लिए, तो ब्लड सैंपल की जो ट्यूब रहती है, उस सैंपल ट्यूब में ऑलरेडी एंटीकोएगुलेंट रहता है, इसीलिए उस ट्यूब में सैंपल ट्यूब में ब्लड क्लॉट नहीं होता है. समझ में? तो उससे ये नेचुरल एंटीकोएगुलेंट ब्लड में होने की वजह से हमारा ब्लड इंटैक्ट ब्लड वेसल में क्लॉट नहीं होता है. नेक्स्ट फंक्शन एल्ब्यूमिन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन? एल्ब्यूमिन concern or it regulate or it maintains the osmotic pressure of the blood. It maintains osmotic pressure of the blood. ये ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स व्हाट? से फॉर एग्जांपल दिस इज द कंटेनर. व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंटेनर and this container is filled with the pure water.
filled with the pure water, 1 liter pure water. This is 1 liter pure water. Pure water means strictly H2O और उसमें कुछ भी नहीं है, strictly H2O means pure water है, H2O 1 liter. तो आगे इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? नहीं. जैसे हमने इसमें NaCl ऐड किया, NaCl 10 ग्राम ऑफ NaCl ऐड किया, तो इस NaCl की वजह से मीन्स यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, NaCl प्लस वाटर दे टुगेदर फॉर्म सॉल्यूशन. Now here NaCl act as solute while the water act as solvent because the proportion of NaCl is higher as compared to the lower as compared to the water. So higher proportion में कौन है? water, lower proportion NaCl. So higher proportion में water का, इसलिए water solvent है और यहाँ पर NaCl solute. So this is solution. Now what is the osmotic pressure? When the solute exerts its pressure on the entire solution, this pressure is nothing but the osmotic pressure of that solution. Getting this? So here osmotic pressure is due to the presence of due to the presence of solutes. It is one of the colligative property. ये आप लोग केमिस्ट्री में आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले. ओके, सो दिस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज रेगुलेटेड और मेंटेन्ड बाय द presence of this albumin, serum albumin. Now globulin means what? Globulin is one of the most important protein and it forms antibodies. क्या means it is concerned with the immunity means जो एंटीबॉडी होती है. अभी एंटीबॉडी क्या होती है आगे पता चलेगा आपको. देखो, antigen means any foreign substance or any foreign proteins. When such protein enters into our body, this protein invades to our body and along with this protein also stimulates to our immune system to respond it. So हमारी बॉडी उसे रिस्पॉन्ड क्या देती है? उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है. ओके, एंड सच एंटीबॉडी किल्स द एंटीजन्स. Okay, so this is called as immunity. This is immunity means our disease resisting power. So disease resisting power is ये किसकी वजह से होता है? एंटीबॉडी. जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन जाता है, इट में भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कोई भी पैथो मीन्स डिसीज, जेन मीन्स एजेंट, ऐसा एजेंट कि जिससे डिसीज होता है, ऐसा एजेंट जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है और वो एंटीबॉडी उसे किल कर देती है. ओके, और आगे हम इम्यूनिटी में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो ग्लोबुलिन्स क्या होता है? गैमा ग्लोबुलिन्स और इसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, मींस एंटीबॉडी होते हैं. ओके, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द plasma. Now what are the next components contained in the plasma? Then plasma contains 1% other substances. And these other substances includes nutrients. What? Nutrients. It includes glucose. Plasma contains glucose. Then fatty acids. Then glycerol. Then diglycerides. Then amino acids. Then vitamins. These are all nutrients present in the plasma. Then excretory substances means what? Excretory substances means those substances which are unwanted, waste substances which is not required for our body. Those substances which are present in the blood. Thus many substances like carbon dioxide, excess of water, excess of vitamins, excess of hormones are जो भी चीज बॉडी में ज्यादा हो जाती है वो एक्सक्रीटरी बन जाती है. ओके, सो एक्सक्रीटरी substances includes carbon dioxide. Then it includes creatinine. Creatinine क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा. Creatinine, then xanthine, hypoxanthine, then most important bile pigments.
बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं? बाइल पिगमेंट्स. What is the bile pigments? Bile pigments are yellow color pigment. These pigments are formed during the rupture of red blood cell. What happens? Red blood cell has 120 day लाइफ स्पैन. एक रेड ब्लड सेल का हम लाइफ स्पैन देखते हैं तो 120 डेज होता है. आफ्टर द 120 डेज दिस रेड ब्लड सेल दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन. स्प्लीन इधर एक वेट शेप ब्लैक कलर का लिम्फेटिक स्मॉल ऑर्गन होता है where old RBCs are worn out or destroyed. After destroying this red blood cells, उसके अंदर का हीमोग्लोबिन निकलता है और उस हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है. तो लिवर में मेटाबॉलिज्म कैसा होता है? This hemoglobin split into three parts. One is the protein and it is iron and the porphyrin ring. Iron is reutilized for the resynthesis of the hemoglobin. Protein also stored, but porphyrin is converted into the yellow pigment, that is bilirubin and biliverdin. And these yellow pigments are released into blood. Some yellow pigments, these bile pigments are released into blood, and some of them are released eliminate or remove through our fecal matter, means excreta, means undigested food. That's why the color of our undigested food or excreta is also yellow due to the presence of stercobilin, means this bile pigment. And some pigments are filtered in the kidney and they are excreted or eliminated along with the urine. That's why our urine is also yellow in color. It is because of presence of these bile pigments. It is called urochrome. Okay, stercobilin and urobilin कहते हैं. और कुछ कई बार ऐसा रहता है कि लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो बाइल पिगमेंट्स बॉडी में बढ़ जाते हैं और स्किन के नीचे बाइल पिगमेंट डिपॉजिट होने लगते हैं तो पूरे हमारी बॉडी की एंटायर स्किन येलो दिखने लगती है. सच कंडीशन इज कॉल्ड एज जॉन्डिस और एक्टर्स, जिसे आप काविल कहते हो, जॉन्डिस. समझ में? तो बाइल पिगमेंट्स एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है. इट आल्सो इंक्लूड्स गैसेस. ब्लड में गैसेस कौन से होते हैं? इट कंटेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट में नाइट्रोजन भी होता है, बट वेरी स्मॉल, वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट, ट्रेस अमाउंट पे. अलॉन्ग विद सम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक सल्फेट, फास्फोरस, क्लोराइड, magnesium, small amount of zinc, copper, bicarbonate ions. This is all about ये जितना भी है that is called as plasma. That is called as plasma. And remember हम next lecture में discuss करने वाले हैं. There are three blood cells. One is the red blood cell, then white blood cell, and platelets. These are blood cells. कौन कौन सी? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. तो ये ब्लड सेल और प्लाज्मा सारे मिलाकर हम इसे ब्लड कहते हैं. समझ में? तो इतना इधर का हुआ ये प्लाज्मा और उसमें क्या है? प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स है. So in the next lecture we will going to discuss about the red blood cells, then white blood cell and then platelets, and after that we will jump on the heart, how the heart is working. Okay, today we will stop here. The remaining part we will see in the next lecture. Thank you.